Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज बायनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग एंड पार्ट 1 इज a + 2b रेज़ टू द पावर 5। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम को लिख लेते हैं। a + x रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू nc0 इंटू a रेज़ टू द पावर n प्लस nc1 इंटू a रेज़ टू द पावर n-1 इंटू x प्लस nc2 इंटू a रेज़ टू द पावर n-2 इंटू x square plus up to ncr-1 into a raised to the power n minus r-1 into x raised to the power r-1 plus ncr into a raised to the power n minus r into x raised to the power r plus up to ncn-1 into a into x raised to the power n-1 plus ncn into x raised to the power n. नेक्स्ट हम a + 2b रेज़ टू द पावर 5 की करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 5c0 इंटू a रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5c1 into a raised to the power 5-1 into 2b plus 5c2 into a raised to the power 5-2 into 2b square plus 5c3 into a raised to the power 5-3 into 2b cube plus 5c4 into a raised to the power 5-4 2b raised to the power 4 plus 5c5 into 2b raised to the power 5. This is equal to 5c0 into a raised to the power 5 plus 5c1 into a raised to the power 4 into 2b plus 5c2 into a raised to the power 3 into 4b square plus 5c3 into a square into 8b cube plus 5c4 into a into 16b raised to the power 4 plus 5c5 into 32 into b raised to the power 5. अब यहाँ पे ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं हम इनको फाइंड कर लेते हैं पहले। We know that NCR is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. We also know that NCn is equal to 1. अब हमारे पास 5c0 आ जाएगा 5 factorial over 0 factorial into 5 minus 0 factorial. This is equal to 5 factorial over 0 factorial is 1 and 5 minus 0 is 5. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 factorial, 5 factorial, 5 factorial से हो जाएगा कैंसिल and this is equal to 1. 5c1 is equal to 5 factorial over 1 factorial into 5 minus 1 factorial. This is equal to 5 factorial over 1 factorial is 1 and 5 minus 1 is 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 factorial. This is equal to 5 into 4 factorial over 4 factorial.
4 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 5. 5c2 is equal to 5 factorial over 2 factorial into 5 minus 2 factorial. This is equal to 5 factorial over 2 factorial is 2 into 3 factorial. This is equal to 5 into 4 into 3 factorial over 2 into 3 factorial. 3 factorial से हो जाएगा कैंसिल. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. This is equal to 10. 5c3 is equal to 5 factorial over 3 factorial into 5 minus 3 factorial. This is equal to 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial into 2 factorial. 3 factorial से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 20 over 2. 2 into 1 is 2, 2 into 10 is 20, so this is equal to 10. 5c4 is equal to 5 factorial over 4 factorial into 5 minus 4 factorial. This is equal to 5 into 4 factorial over 4 factorial. 4 factorial से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 5 और 5c5 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल बिकॉज NCN is equal to 1 and here n is equal to 5. A plus 2b raised to the power 5, this is equal to 1 into a raised to the power 5 plus 5 into a raised to the power 4 into 2b plus 10 into a cube into 4b square plus 10 into a square into 8b cube plus 5 into a into 16b raised to the power 4 plus 1 into 32b raised to the power 5. This is equal to a5 plus 10 into a raised to the power 4 into b plus 40 into a cube into b square plus 80 into a square b cube plus 80 into a into b raised to the power 4 plus 32 into b raised to the power 5. So this is our final and required result. Next है हमारे पास part 2, x over 2 minus 2 over x square raised to the power 6. इसका सॉल्यूशन करते हैं. x over 2 minus 2 over x square raised to the power 6. This is equal to x over 2 plus into minus 2 over x square raised to the power 6. This is equal to 6c0 into x over 2 raised to the power 6 plus 6c1 into x over 2 raised to the power 5 into minus 2 over x square plus 6c2 into x over 2 raised to the power 4 into minus 2 over x square raised to the power 2 plus 6c3 into x over 2 raised to the power 3 into minus 2 over x square raised to the power 3 plus 6c4 into x over 2 raised to the power 2 into minus 2 over x square raised to the power 4 plus 6c5 into
x over 2 into minus 2 over x square raised to the power 5 plus 6c6 into minus 2 over x square raised to the power 6. This is equal to 6c0 into x raised to the power 6 over 64 plus 6c1 into x raised to the power 5 over 32 into minus 2 over x square plus 6c2 into x raised to the power 4 over 16 into 4 over x raised to the power 4 plus 6c3 into x cube over 8 into minus 8 over x raised to the power 6 plus 6c4 into x square over 4 into 4 over x raised to the power into 16 over x raised to the power 8 plus 6c5 into x over 2 into minus 32 over x raised to the power 10 plus 6c6 into 64 over x raised to the power 12. अब यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं हम इनको फाइंड कर लेते हैं. 6c0 this is equal to 1, 6c1 this is equal to 6, 6c2 this is equal to 6 factorial over 2 factorial into 6 minus 2 factorial. This is equal to 6 into 5 into 4 factorial over 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial 4 factorial से हो जाएगा cancel. 2 factorial is 2 and 6 into 5 is 30. 30 over 2 is 15. 6c3 this is equal to 6 factorial over 3 factorial into 6 minus 3 factorial. This is equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial into 3 factorial. 3 factorial 3 factorial से हो जाएगा cancel और 3 factorial होता है 6 के equal. तो यहाँ पे ये 3 factorial इस 6 के साथ हो जाएगा cancel and 5 into 4 is 20. 6c4 this is equal to 6 factorial over 4 factorial into 6 minus 4 factorial. This is equal to 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial into 2 factorial. 4 factorial 4 factorial से हो जाएगा cancel. 2 factorial is 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 3. 3 into 5 is 15. 6c5 this is equal to 6 factorial over 5 factorial into 6 minus 5 factorial. This is equal to 6 into 5 factorial over 5 factorial. 5 factorial 5 factorial से हो जाएगा cancel and this is equal to 6 and 6c6 this is equal to 1. अब हमारे पास आ जाएगा x raised to the power 6 over 64 plus 6 into x raised to the power 5 over 32 into minus 2 over x square plus 15 into x raised to the power 4 over 16 into 4 over x raised to the power 4 plus 20 into
x cube over 8 into minus 8 over x raised to the power 6 plus 15 into x square over 4 into 16 over x raised to the power 8 plus 6 into x over 2 into minus 32 over x raised to the power 10 plus 64 over x raised to the power 12। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में। 2 into 1 is 2, 2 into 16 is 32, 2 into 3 is 6, 2 into 8 is 16, 4 into 1 is 4, 4 into 4 is 16, 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, 4 into 1 is 4, 4 into 4 is 16, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, x raised to the power 5 over x square is x cube। तो हमारे पास x की पावर आ जाएगी 3, x raised to the power 4, x raised to the power 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे x क्यूब के साथ हो जाएगा कैंसिल और डिनोमिनेटर में ये जो x है इसकी पावर आ जाएगी 3। नेक्स्ट x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में ये जो x है इसकी पावर हो जाएगी 6। उसके बाद x के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 9। अब हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 6 ओवर 64 माइनस 3 ओवर 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 15 ओवर 4 माइनस 20 over x cube plus 60 over x raised to the power 6 minus 96 over x raised to the power 9 plus 64 over x raised to the power 12. So this is our final and required result. Next है हमारे पास part 3, 3a minus x over 3a raised to the power 4. अब इसका सोल्यूशन करते हैं। 3a माइनस एक्स ओवर 3a रेज़ टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 3a प्लस इंटू माइनस एक्स ओवर 3a रेज़ टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 4c0 इंटू 3a रेज़ टू द पावर 4 plus 4c1 into 3a raised to the power 3 into minus x over 3a plus 4c2 into 3a raised to the power 2 into minus x over 3a raised to the power 2 plus 4c3 into 3a into minus x over 3a raised to the power 3 plus 4c4 into minus x over 3a raised to the power 4. This is equal to 4c0 into 81 into a raised to the power 4 plus 4c1 into 27 a cube into minus x over 3a plus 4c2 into 9a square into x square over 9a square plus 4c3 into 3a into minus x cube over 27a cube plus 4c4 into x raised to the power 4 over 81
इंटू ए रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है इनको फाइंड कर लेते हैं। 4C0 दिस इज इक्वल टू 1, 4C1 दिस इज इक्वल टू 4, 4C2 this is equal to 4 factorial over 2 factorial into 4 minus 2 factorial. This is equal to 4 into 3 into 2 factorial over 2 into 2 factorial. 2 factorial 2 factorial से हो जाएगा cancel. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4 and this is equal to 6. 4C3 this is equal to 4 factorial over 3 factorial into 4 minus 3 factorial. This is equal to 4 into 3 factorial over 3 factorial into 1. 3 factorial से हो जाएगा cancel and this is equal to 4 and 4C4 ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हमारे पास आ जाएगा 81 into a raised to the power 4 plus 4 into 27 a raised to the power 3 into minus x over 3a plus 6 into 9a square into x square over 9a square plus 4 into 3a into minus x cube over 27a cube plus x raised to the power 4 over 81 into a raised to the power 4। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको रिड्यूस कर लेंगे। 3 into 1 is 3, 3 into 9 is 27, 9 से हो जाएगा कैंसिल। 3 into 1 is 3, 3 into 9 is 27, a cube over a is a square, a square से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a के साथ जब कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 81 इंटू a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 36 a स्क्वायर इंटू x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 4 x क्यूब ओवर 9 a स्क्वायर प्लस x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 81 into a raised to the power 4. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।